So yes, if you're feeling down right now, if you're feeling overwhelmed, if you're feeling stuck, then this conversation with me right now, this talk will change your life. Okay, so stay with me, and you're here for a reason. So we are talking about the smile. So there are some days where you're smiling and when you're happy about your life, and there are some dark days we are not happy, we are not smiling, right? So जो हम dark days हैं उसके बारे में आज बात करेंगे. We're gonna talk about those dark days where you're not smiling, you're not happy about your own life, and I can feel that because I can relate to it. I was there, so I'm gonna give you some advices today. Okay, the thing is, I feel the pain. I feel the pain where I want to be and where I'm not, just being concerned about where I want to be and I'm not there. So I feel that pain and I'm not shy from that pain, because that's the biggest inner voice. Inner voice is my biggest motivator, and that is gonna, push me every time. So when you feel that, you are not there, you're thinking about your goals, you're thinking, writing your goals, new year is coming, so you're writing your goals and still you feel like, oh, that's not achievable. That pain, feel that pain, okay? But also make sure that there are some people, who are most unhappy because they are extremely ambitious but are lazy. Okay, so you need to balance, you need to back up. So if you feel that pain, that you want to achieve those goals, you feel that pain that you are not there yet, but also back up with your hard work, which is very important. You need to balance that stuff. Okay, so now you're gonna ask me, Gaurav, the question is, how do you build that confidence, self-confidence, from breaking in those tough times? So how do you build that confidence? We're gonna talk about that. I was there, and let me show you the picture of mine. In 12th standard. Let's start from that. So this is me. Okay, so this is me. Yeah, this is me in 12th standard. So I was shy. I was introvert. I couldn't talk to strangers. So we are going back to my childhood, just to give you some brief about my all stories, why you're here, why I'm here to tell you my, this motivation thing, because I was there. So I couldn't talk to strangers, I couldn't talk to people, and I was always, insecure about my presence in my group, and I was always chasing those fake people around me. So those were times in 12th standard, and I was like, shit, kuch karna padega iska. So I was like, not motivated, or you can say I couldn't think about big goals. It was just like, yeah, छोटा मोटा आसपास जो थोड़ी बहुत दोस्ती है इसको maintain कर लूं, थोड़ा बहुत पढ़ाई अच्छी कर लूं. That was the only thing which was happening in my life. And then I realized कि काफी लोग, I felt कि यार मेरे अंदर वो aura क्यों नहीं है. Sometimes you feel like कि shit यार इसके पास इतना confidence कैसे है, and how is, he is trying to attract all the people, and मेरे पास कोई बात करने के लिए होता है. I always literally begged for the attention. I remember those days in 12th standard, and that's the time which changed my life. So us 12th standard mein, I was always begging for the attention. I was always begging for the people to like me. I was always the nice guy, and हमेशा nice जो guy बनते हैं उनकी ही life में थोड़ा सा problems चलती हैं. So I was always nice guy. And then then one thing changed, and एक चीज हुई थी, trip. हम गए थे माउंट आबू. So we went to this माउंट आबू school trip होती है. And then school trip changed my life, because what happened is, before the trip I bought all the fancy stuff. मैंने देखा कि मेरे जो दोस्त थे आसपास के, they were show off करते थे अपने फोन का. They were showing off about their clothes and stuff, brands. I forced my parents to please, we were, just like, उससे पहले कोई brands इतने इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे. मेरे को लगा था जो ये बोल रहे हैं वही brands मेरे को लेके आने हैं, and I don't care how much they cost. I forced my parents to please, चलो चलते हैं. I thought that's gonna give me confidence. Trust me, that was the only thing in my mind कि यार मैं brands लूंगा, I'm gonna make sure कि मैं उसको पहनूंगा, show off करूंगा, phone लेके जाऊंगा, people gonna like me. That was the only reason to buy those stuff. And you will be shocked to know, and I was also surprised, that worked. And that was a trap, because जब मैं trip पे गया माउंट आबू, it was like a couple of days. And also one more thing, उस time पे जब ट्रिप थी उससे पहले मेरे को थोड़ा सा एक्सीडेंट भी हुआ था, बिकॉज आई वाज चेजिंग फ्यू पीपल, समथिंग लाइक दैट. देन उसमें क्या हुआ कि जब वो ट्रिप हुई थी, आई रियलाइज मुझे ट्रिप पे जाना है ना. जब मैंने वो सब कुछ चीजें ली, कपड़े पहने ब्रांड्स की, फोन लिया, एवरीवन वाज लाइक अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी. एंड दैट वाज द ट्रैप, बिकॉज
वो मुझे लगा कि वही है आप सब कुछ, एंड वो चीजें मुझे रियलाइज हुई कि मटेरियलिस्टिक मुझे बनना पड़ेगा, मुझे ब्रांड्स ही पहनने पड़ेंगे लाइफ में, मुझे फोन लेना पड़ेगा। आई बॉट द N8, नो के सबसे एक्सपेंसिव फोन था उस टाइम पे, N8 फोन लिया था। एंड everyone was like surprised कि सब जो स्कूल के टीचर भी थे वो भी मेरे फोन से पिक्चर्स ले रहे थे पूरे ट्रिप की। सो आई वाज लाइक शिट, यही है, दिस इज द कोड, दिस इज द थिंग, मैंने क्रैक कर लिया कोड, गेम यही है कि अच्छे कपड़े लो, अच्छे ब्रांड्स पहनो, अच्छा फोन लो, यही कॉन्फिडेंस आपको देगा, इससे आप अपना लाइफ चलते रहेगी। स्कूल राइट, बट थिंग इज जब मेरा कॉलेज स्कूल खत्म हुआ यहाँ से, ठीक है, दैट वाज अ स्कूल थिंग, उसको मैं गया कॉलेज में, एंड देन व्हेन आई वेंट टू कॉलेज आई रियलाइज्ड शिट, नाउ पीपल आर 100 टाइम्स रिचर देन मी, how will I compete with them? Because अब आपको अच्छे ब्रांड्स नहीं, बहुत लग्जरी ब्रांड्स लेने पड़ेंगे, आपको फोन नहीं, अब आपको सब कुछ लेना पड़ेगा, कार लेनी पड़ेगी, एवरीथिंग। एंड दैट वाज अ ट्रैप, बिकॉज तब मुझे रियलाइजेशन मिला मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं है, बिकॉज दैट वाज अ एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस, एंड आई थिंक यू कैन ऑल्सो रिलेट टू इट कि आप अपने कुछ चीजें लेते हो अपने शो ऑफ करने के लिए, बट वो कब तक करोगे, जस्ट स्मॉल सर्कल तक। व्हेन यू गो आउटसाइड यू मीट अदर पीपल, लोगों के पास है सब कुछ, एंड पीपल आर हैविंग 100 टाइम्स बेटर देन यू। So that was a thing with me. जब मैं कॉलेज गया मैंने रियलाइज किया आई कांट कम्पीट, देन आई रियलाइज आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, ऑन माई स्किल्स, ऑन माई प्रोजेक्ट्स, ऑन माई थिंकिंग, आई नीड टू वर्क ऑन माई थॉट्स कि मैं कैसे परसीव करता हूँ कॉन्फिडेंस को। And then I worked on my fitness. I thought कि this gonna help me, but obviously fitness से आपको physically आपको help मिलती है because people gonna like you, get more attracted. So fitness or something let's say good looks helps, but definitely your thoughts, the way you perceive people, the way you judge people is also matters. वहां से आपको real confidence मिलता है. So वहां से सब कुछ journey start हुई मेरी, and that's what I'm here for a reason, because I'm gonna talk about those things. उसका कॉलेज जब खत्म हुआ, देन आई रियलाइज कि अब कॉलेज खत्म हो गया, एंड वो सो वो स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ खत्म हो जाती है, फिर आप आते हो रियल लाइफ में। सो वहां से चीजें चेंज होने स्टार्ट होती है दोबारा, आप अगेन सोचते हो कि अच्छा लाइफ में अब सब कुछ हो गया, आपने आपने कार ले लिया, आपने वो ले लिया, देन अगेन दोज थिंग्स कम बैक टू माई लाइफ। एंड 2018 में चीज हुई थी, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड जो टॉपिक है आज का, स्प्लैश वाटर एंड स्माइल। सो दिस 18, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, स्प्लैश वाटर एंड स्माइल। 2018 में दोबारा वो कॉन्फिडेंस का मेरा ब्रेकडाउन हुआ था। so, वो मैं पूरी स्टोरी सुना रहा हूं आपको कि चाइल्डहुड से स्टार्ट हुआ, वहां पे कॉन्फिडेंस नहीं था। स्कूल में मैंने सोचा कि मैं सामान लूंगा, फैंसी स्टफ लूंगा, ब्रांड्स लूंगा, कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद फिर वो कॉन्फिडेंस रहा सिर्फ स्कूल तक। उसके बाद वो कॉन्फिडेंस जब टूट गया, जब मैं कॉलेज गया, मैंने देखा अरे वाह सब अमीर हैं, सबके पास पैसा है, तो यहाँ मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था। वहां से मैंने धीरे धीरे बिल्डअप स्टार्ट किया, बॉडी वर्क करना स्टार्ट किया, थोड़े थॉट्स रीअरेंज किए, उसको फिर अच्छा ये कॉन्फिडेंस नहीं। 2018 मुझे वो दोबारा ब्रेकडाउन हुआ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आप बोलो गौरव की, अब मुझसे पूछे कि गौरव हाउ डू यू बिल्ड कॉन्फिडेंस, सो आई विल से दैट पीपल विल चीट यू, पीपल विल एक्चुअली चीट यू, पीपल विल बिट्रे यू, एंड आपको फेक फ्रेंड्स ही मिलेंगे, आपको कॉन्फिडेंस बार बार लूज होगा, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फेल होंगे, एंड आपकी जो चीजें हैं वो दोबारा मेस्ड अप होंगी। बट थिंग इज दिस टॉक, दिस कॉन्वर्सेशन इज गोना हेल्प यू टैकल द सिचुएशन। सो हाउ डू यू बिल्ड कॉन्फिडेंस, वो चीजें होंगी, इट जस्ट की जो कॉन्वर्सेशन होती हैं, जो आपके थॉट्स हैं, अपने जो माइंडसेट को इंप्रूव करोगे, उससे आपको टैकल करने की सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, यू विल बी मोर सफिशिएंट टू टैकल दो सिचुएशन। सो ये इसलिए टॉक जरूरी होती है। एंड जो 2018 का फेज आया था, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो 18 का फेज आया, जो स्प्लैश वाटर एंड स्प्लैश, जिसका आज का टॉपिक भी था मेरा, वो ये था कि यार मैं जेन्युइनली इतना डिप्रेस हो गया था, बिकॉज आई थॉट कि यार बस कॉन्फिडेंस आ तो गया है, बॉडी बन गई है, लुक्स हैं, सब कुछ सही है, स्टिल आई वाज नॉट हैप्पी विद माय लाइफ। एंड द थिंग इज वो हुआ क्यों था, बिकॉज समवन मेड मी रियलाइज दैट आई एम रॉन्ग फॉर माय चॉइसेस इन माय लाइफ, कि मैं जो करना चाहता हूँ, मैं जो एम्बिशियस हूँ, जो मैं लाइफ में करना चाह रहा हूँ, मैं गलत हूँ, मुझे कुछ और करना चाहिए, सो दैट समवन मेड मी रियलाइज आई एम नॉट गुड इनफ। सो उससे मेरा ब्रेकडाउन हुआ था। एंड उसके बाद वो फेक फ्रेंड से, देन योर फेक फ्रेंड made me realize that Gaurav, you are doing the wrong thing, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, and I was like shit यार, and I was being betrayed for being nice to them 2018 में, and I was good looking, I was जो मतलब एक अच्छा लड़का दिख सकता है, मैं सब कर रहा था, but I was like मैं अच्छा भी हूँ, अच्छे से बात करता हूँ, I'm being generous, I'm being kind, I'm being nice, तभी मैं cheat feel हुआ from my friends, from my other people, then I just broke down। यानी 18 की बात है, तब मेरे लिए इतना मेरे को हो गया था कि मुझे सुबह लिखना पड़ गया कि गौरव तुझे पानी मार के हंसना है, स्माइल करना है मिरर में, अपने आप को देख के हाई फाई करना है। एंड दोस वर द रफ डेज 2018 में। सो वहां से कॉन्फिडेंस मैंने दोबारा बूस्ट अप करना स्टार्ट किया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बार बार टूटेगा, एंड आपके जो लोग हैं वो जज करेंगे, एंड पीपल विल डाउट यू, पीपल विल बिट्रे यू,
वो सब कुछ होने वाला है. You just need to be aware of it, self aware कि ये होता है, and you need to be just aware of the situation कि हाँ अब मुझे जब वो situation आएगी तो I will be more sufficient, you know, more, you have more this, you can say the mindset is there to tackle the situation. And yeah, so that's what we are talking about. So childhood say, college say, and then 2018, few years back, and now things are getting better. Now I know exactly क्या क्या चीजें मुझे खुश करते हैं. So you need to write it down also. कि exactly, and I think अगर मैं अभी इस situation को, इस conversation को end करना चाहता हूँ तो एक, I think you can take away one thing which is very important to build self confidence. Because if you have self confidence, you will be happy. Trust me. Because क्या होता है कि आपका confidence होता है and you feel that you are actually working on yourself, working on your projects, तो आप खुश रहते हो. You're not worrying about other people's opinion, you're not thinking about other people's choices, then you suddenly realize that you are happy. So one takeaway from this whole conversation, so only one thing, just कोई पूछेगा ना गौरव, just give me one thing how to build that confidence instantly, then there is only one thing, just keep promises to yourself and make it happen. So अगर आपने प्रॉमिस किया ना कि यार आज मुझे इवनिंग में नेटफ्लिक्स नहीं चलाना, आज मुझे अपने प्रोजेक्ट पे काम करना है 2 घंटे, तो जस्ट मेक इट हैपन. वो स्मॉल विन्स है ना, दैट्स गोना स्टैक अप, वो सारी स्मॉल विन्स स्टैक अप होंगे एंड दैट्स गोना गिव यू कॉन्फिडेंस. बिकॉज़ थिंग इज, आप डाउट कब करते हो? Just ask yourself, when you literally not working on your small things, आपके small task है, आज आपने लिखा कल कि यार मुझे 2 घंटे वो काम करना है, आप वो काम नहीं करते हो, that's where you doubt yourself कि shit मैं बड़े goals कैसे achieve करूंगा. How you gonna achieve those big goals when you're not working on your small goals, small task. So that's the thing, you need to make sure that you're working on your small goals. Write it down कि अच्छा ये चीजें करनी है तो करनी है. You need to make sure that you're working on that stuff so that you build those wins, small wins जो stack up होंगे and you build the real confidence. That's the real confidence if you ask me. जहां पे आपको पता है कि आपके अंदर ability है कि आप अपने आपको डाउट नहीं करोगे. Now you can work on your bigger goals. Now you know exactly अच्छा मेरे अंदर ability आ गया, मैं कर लूंगा because I can work on my habits, I can work on my practices, I can work on my rituals. So जो routine है वो बनाना start करो, work on your routines, work on your habits, and that small wins gonna help you to achieve your bigger goals. And that's where you feel happiness. Because when you know that you are confident, when you know that you're working on your work, you're working on your projects, and अगर आपने लिखा कि मेरे को पढ़ाई करनी है तो 2 घंटे पढ़ाई करनी है. Don't distract yourself from your reels, shorts. ठीक है, once in a while you can watch them when you're just for the fun, but when you're working, when you have written it, just please don't distract yourself. वहां से आपका डाउट आना स्टार्ट होगा, वहां से आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा. So yeah, that's it. So I'm just going to end this conversation, this talk with this last thought. If you want to feel happy, just work on your confidence and be ready. People are able. ऐसा नहीं कहूँगा, but yeah, still, you just need to make sure that it's not a real fantasy. It's a real practical life. It's not a fantasy world. So make sure that you are ready for this world. You are ready for this, this जो चीजें आपसे होने वाली हैं उसके लिए आप ready हो, आप tackle कर सकते हो situations को, and it's gonna be better. Yeah, thank you so much for joining this live session. Thanks so much for this.